गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्ट किया है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट किया। और टेररिस्ट कैंप्स जो 9 लोकेशंस पर थे पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उन्हें टारगेट किया गया। तो टारगेट जो है चूज़ किए गए थे डिसमेंटल करने के लिए एंटी इंडिया टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। साइट्स जो थी वो कनेक्टेड थे किसी ना किसी तरह से बैंड आउटफिट्स से, जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। और ये ग्रुप्स जो है ऑपरेट करते होते थे देर अपने ट्रेनिंग कैंप्स को और लॉन्च पैड्स को। और गवर्नमेंट उनकी जो है गवर्नमेंट रन बिल्डिंग्स के थ्रू ये कैंप्स चलाए जाते थे। तो अगर हम देखें तो इससे क्या एक तरह से सिग्नल दिए गए हैं। तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को ऐसा रिस्पांस बनाया है कि वो पहलगाम अटैक का रिवेंज है। और उसको ही जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो 2001 के पार्लियामेंट अटैक से चलता आ रहा है, उसको एक तरह से इंडिया ने अपना रिस्पांस दिखाया है। तो इसने हाईलाइट किया है जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे जो ग्रुप्स हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स, कि ये दोनों पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, इसीलिए हमने इनको टारगेट किया है। इंडिया जो है अपनी डॉक्ट्रिन जो है कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना टारगेट किए पाकिस्तान की कन्वेंशनल मिलिट्री को इंडिया ने जो है वो अभी भी कंटिन्यू किया है इस पॉलिसी को। इंडिया ने कहा है कि ये नॉन मिलिट्री अटैक है, प्रीएम्प्टिव अटैक है। और ऑपरेशन सिंदूर एक एस्केलेशन है डेप्थ में और स्केल में। और टारगेट इस बार जो है वो सिर्फ पीओके ही में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर डीप किया गया है। इंडिया ने एम्फेसाइज किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी है, और हम एक फुल स्केल वॉर नहीं चाहते हैं। लेकिन इसने क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो अब कोई भी अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को शील्ड नहीं कर सकता है। ठीक है। तो 24 मिसाइल स्ट्राइक्स किए गए एक ही दिन में, जो आज तक का इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल डे स्ट्राइक था। इंडिया ने सिग्नल किया कि कोई भी पाकिस्तान का जो पार्ट है वो ऑफ लिमिट्स नहीं है, हम कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रिएक्टिव से जो है अब हम प्रीएम्प्टिव और असर्टिव की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करने से रिफ्रेन किया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उसमें प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए गए हैं नीश टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए, और केयरफुली चूजन वॉर हेड्स हैं मिनिमाइज किया गया है जिसमें कोलैटरल डैमेज। तो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस जो हैं वो मिसाइल्स या बॉम्ब्स हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं एक्यूरेटली स्ट्राइक करने के लिए स्पेसिफिक टारगेट्स को, ताकि कोलैटरल डैमेज मिनिमम हो। तो जो ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस होते हैं ये जीपीएस, लेज़र गाइडेंस, इंफ्रारेड सेंसर्स या रडार्स का यूज़ करते हैं टारगेट ट्रैक और हिट करने के लिए टारगेट्स को प्रिसाइजली एडजस्ट कर लेते हैं अपने ट्रैजेक्टरी को ये मिड एयर ही, और ये टारगेट करते हैं विद प्रिसीजन, ऑफर करते हैं ग्रेट एक्यूरेसी विद अनगाइडेड म्यूनिशंस। और इनको लॉन्च किया जा सकता है एयरक्राफ्ट से, शिप्स से, ग्राउंड प्लेटफॉर्म से या यूएवी से। तो इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किए रफाल जेट्स जो जिन्हें यूज़ किया गया स्काल्प मिसाइल्स पर डीप स्ट्राइक्स के लिए, और हैमर मिसाइल्स को यूज़ किया गया मीडियम रेंज प्रिसीजन टारगेट्स के लिए। तो हैमर जो है वो एक एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम है, डेवलप किया गया है साफरान द्वारा, जो कि एक फ्रेंच एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर्स तक की है और ये रफाल जेट्स पर माउंट किया जाता है। इसके एडवांस फीचर्स अगर हम देखें तो ऑटोनॉमस है, जैमिंग रेजिस्टेंट है, और ये लो अल्टीट्यूड से भी जो है इवन रफ टेरेन्स के ऊपर भी जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया ने कई हैमर सिस्टम्स पिछले कुछ सालों में प्रोक्योर किए हैं ताकि हम अपनी एरियल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सके। दूसरे हैं स्काल्प मिसाइल्स, जिसको स्टॉर्म शैडो कहा जाता है यूके में। एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जो कि लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिशंस करता है विद स्टेल्थ फीचर्स। एमबीडीए जो कि एक यूरोपियन मल्टीनेशनल डिफेंस कंपनी है उसने इसे बनाया है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर के आसपास है। इसको नाइट या बाकी किसी भी वेदर कंडीशंस में डिप्लॉय किया जा सकता है। स्काल्प यूज़ करता है कॉम्बिनेशन ऑफ आईएनएस, जीपीएस और टेरेन रेफरेंसिंग नेविगेशन के लिए। दूसरे है मीटियोर जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, डेवलप किया गया इसे भी एमबीडीए द्वारा। फिर ब्रह्मोस तो आपको पता है इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, और इसकी मैक 3 तक की स्पीड हो जाती है।
लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं वो एरियल वेपन्स जो सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज दोनों को कंबाइन करते हैं और ऑटोनॉमसली और मैनुअली दोनों ही तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉस्मोस 482। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पार्ट है सोवियत स्पेसक्राफ्ट कॉस्मोस 482 का, जो री एंटर होने वाला है अर्थ के एटमॉस्फेयर में अराउंड 10 मई 2025 को। और ये प्लैनेट के हमारे प्लैनेट के से लगभग 5 डेकेड से ऑर्बिट कर रहा है। तो ये सोवियत एरा वीनस लैंडर है ये कॉस्मोस 482, जिसको 1972 में लॉन्च किया गया था एज पार्ट ऑफ वेनेरा स्पेस प्रोग्राम। ये एक्चुअली वीनस पर लैंड होना था, लेकिन मैल फंक्शन हुआ इसके अपर स्टेज में, तो ये अर्थ के ऑर्बिट में ही स्ट्रक हो गया। तो लगभग 50 साल तक स्पेस में स्ट्रैंडेड रहा। 500 किलो का जो इसका लैंडर मॉड्यूल है वो अब अनकंट्रोल्ड री एंट्री लेने वाला है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो जो अपर स्टेज था इस लॉन्च व्हीकल का वो प्रीमेच्योरली शट डाउन हो गया बिकॉज ऑफ अ टाइमर माल फंक्शन, और इसकी वजह से स्पेस क्राफ्ट जो है ये अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर पाया। और जो मेन स्पेस क्राफ्ट है वो इवेंचुअली बर्न हो गया एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो लैंडर मॉड्यूल है वो ऑर्बिट ही करता रहा। वेनेरा प्रोग्राम जो है 1961 से 1984 तक चला, सोवियत इंटरप्लेनेटरी मिशन, जो कि वीनस को एक्सप्लोर करना चाहता था। ओके, 28 प्रोब्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें 13 जो है वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए और 10 जो है वो सरफेस पर लैंड हुए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्काल्प मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने स्काल्प मिसाइल्स देखे, जिसको स्टॉर्म शैडो कहते हैं, लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। इसको हम फुली अगर हम देखें तो इसको यूके और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। तो ये इजिप्ट, इंडिया, इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई इन सभी कंट्रीज़ की एयर फोर्सेस की सर्विस में है। इनकी रेंज 500 किलोमीटर तक हो जाती है और 1300 किलोमीटर का वेट ये कन्वेंशनल इसका वेट है, और कन्वेंशनल वॉरहेड ये 450 केजी तक का कैरी कर सकता है। सबसोनिक स्पीड पर ये फ्लाई करता है लो ऑल्टीट्यूड पर। और मिसाइल जो है इसका इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम कंपेयर करता है टारगेट को प्रीलोडेड इमेजेस के साथ, ताकि हाई एक्यूरेसी के साथ ये टारगेट कर सके उसे और मिनिमाइज हो सके कोलैटरल डैमेज। तो इंडिया ने स्काल्प को अपने रफेल फाइटर जेट्स के साथ जो है इंटीग्रेट किया हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पर्शियन गल्फ। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान किया है कि वो ऑफिशियली रीनेम कर देंगे पर्शियन गल्फ को एज अरेबियन गल्फ जब वो सऊदी अरेबिया में विजिट करेंगे। तो पर्शियन गल्फ को हिस्टोरिकली यूज़ किया जाता है सिंस 16th सेंचुरी, और अरब स्टेट जो है सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो अभी भी इसको अरेबियन गल्फ कहना चाहती हैं। 2012 में जब गूगल ने इस वाटर बॉडी को अपने मैप्स पर नेम नहीं किया था, तो ईरान ने कहा था कि वो गूगल को स्यू कर देगा। ठीक है, और पर्शियन गल्फ एक मार्जिनल सी है इंडियन ओशन का, कनेक्टेड है ये अरेबियन सी से वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसकी कोस्ट लाइन जो है वो 5117 किलोमीटर तक है, और ईरान जो है वो लॉन्गेस्ट स्ट्रेच इसको टच करता है। तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इसको पर्शियन गल्फ की तरह ही जो है वो इस वाटर बॉडी को मानती है। पर्शियन गल्फ सेंट्रल है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। 30% वर्ल्ड के ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही जो है वो निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेनू कुरुबा ट्राइब। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जेनू कुरुबा फैमिलीज़ जो है वो लॉन्ग अवेटेड रीऑक्यूपेशन के लिए लॉन्ग अवेटेड रीऑक्यूपेशन शुरू कर रही हैं अपने एंसेस्ट्रल होम्स का नागरहोल नेशनल पार्क में। तो जेनू कुरुबा पीवीटीजीज़ हैं कर्नाटका बेस्ड, और ये प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इनकम इनका है लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज। स्मॉल सेटलमेंट्स जिनको हम हार्डी कहते हैं वहाँ पर रहते हैं। सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, और इनके अगर हम रिलीजियस बिहेवियर देखें तो सुपर नेचुरल बींग्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं IMDEX 2025। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो INS किल्तन जो कि एक इंडियन नेवल शिप है, सिंगापुर में अराइव हुई है पार्टिसिपेट करने के लिए IMDEX एशिया 2025। तो IMDEX एशिया एक प्रीमियर मैरीटाइम एंड डिफेंस एग्जीबिशन है एशिया पैसिफिक रीजन में, जो बायनियल कंडक्ट होती है सिंगापुर में सिंस 1997। तो इसमें नेवल प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स शोकेस किए जाते हैं, कटिंग एज मैरीटाइम टेक्नोलॉजी शोकेस की जाती हैं, हाई लेवल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी इसी का ही पार्ट है, जो कि 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और
राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के द्वारा। ओके, तो इसमें नेवी चीफ्स, कोस्ट गार्ड हेड्स, पॉलिसी मेकर, स्ट्रेटजिक एनालिस्ट और मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर डिस्कशंस करते हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Operation Sindoor. This topic is important for your security section. So India has successfully conducted Operation Sindoor, which is a joint military operation involving the Army, Navy and Air Force, so as to target terrorist camps at 9 locations in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir. So these targets were chosen to dismantle anti-India terrorist infrastructure related to groups which are actively engaged in cross-border terrorism. The sites which were connected to banned outfits like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen, which are also known to receive direct support of the Pakistan Army and intelligence services, were targeted. So these groups operate from training camps and launch pads, often concealed within the government-run buildings of Pakistan. So, India has framed Operation Sindoor as a response not just to the recent Pahalgam attack, but also to the 2 decade long pattern of Pakistan sponsored terrorism since 2001 Parliament attack. So, it has also highlighted the role of groups like Jaish e Mohammed and Lashkar e Taiba. India continues its doctrine of hitting terrorist infrastructure without targeting Pakistan's conventional military. These strikes were labeled as non military and preemptive, similar to the approach in 2016 surgical strikes and 2019 Balakot airstrike. However, Sindoor marks an escalation in depth and scale, striking targets deep within Pakistan and not just in POK. India has emphasized Sindoor was focused, measured, and non escalatory, showing that it does not seek a full scale war now. However, it has sent a clear message that Pakistan's nuclear deterrence posture no longer shields its terrorist infrastructure. Okay, so 24 missile strikes were launched in a single day, which is the which is the largest single day strike so far. India has signaled that no part of Pakistan is off limits now, and we are able to target deep inside the Pakistani heartland now. So, this is showing a clear shift in policy from reactive to preemptive and assertive. Indian Army, Navy, and Air Force all took part in this operation, and this also demonstrates their joint operational strength. India refrained from hitting Pakistani military installations and so as to avoid conventional escalation, but the depth and scale of the strikes clearly altered the red line. So the next topic is precision guided missiles. This topic is important for your security section. So India has carried out Operation Sindoor, targeting 21 terror camps across 9 locations in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir. In response to a recent terrorist attack in Pahalgam, Indian armed forces used precision strikes with niche technology weapons and carefully chosen warheads to minimize collateral damage. The precision guided munitions, which are also called smart weapons or smart bombs, are missiles or bombs which are designed to accurately strike specific targets while minimizing collateral damage. So these precision guided munitions, they use GPS, laser guidance, infrared sensors, or radars to track and hit targets precisely. They can adjust their trajectory mid-air so as to account for weather, wind, or targeting errors. By targeting with precision, the precision guided munitions limit harm to civilians and nearby infrastructure. They offer greater accuracy than unguided munitions with a much smaller margin of error. The precision guided munitions can be launched from aircraft, ships, ground platforms, or UAVs, enhancing their operational flexibility also. So, Indian Air Force has deployed Rafale jets, which use Scalp missiles for deep strikes and Hammer missiles for medium range precision targets. So, Hammer is an air to ground precision guided weapon system developed by Safran, which is a French aerospace and defense company. It has a range of up to 70 kilometers and it can be mounted on Rafale jets as well as fitted to bombs and other guided systems. So this system is autonomous, resistant to jamming, and capable of being launched from low altitudes over rough terrain. India has procured several Hammer systems in recent years to strengthen its aerial strike capabilities. Then we use the Scalp missiles, which is also called the Storm Shadow missile in the UK, and it is an air-launched cruise missile designed for long-range deep strike missions with stealth features. It has been developed by MBDA, which is a European multinational defense company. It can be deployed at night and in all weather conditions.
Scalp uses a combination of INS, GPS, and terrain referencing for navigation. So then we have this Meteor, which is a beyond visual range air missile developed by MBDA, which is effective even in dense electronic warfare environments. Then we all know about BrahMos, which is a supersonic cruise missile, which can reach speeds close to Mach 3. It is jointly developed by India and Russia. Uh, we also used loitering munitions, which are aerial weapons which combine surveillance and strike capabilities. They can be operated autonomously or manually, offering real time intelligence, and they have the ability to strike at the right moment. So the next topic is Cosmos 482. This topic is important for your science and tech section. So as part of the Soviet spacecraft Cosmos 482, a part of the Soviet spacecraft Cosmos 482 is expected to re-enter Earth's atmosphere on 10th of May after orbiting the planet for over 5 decades. So Cosmos 482 is a Soviet-era Venus lander which was launched in 1972 as part of the Venera space program. It was meant to land on Venus, but an upper stage malfunction left it stranded in Earth's orbit. After more than 50 years in space, a 500 kg lander module is expected to make an uncontrolled re entry into Earth's atmosphere around 10th of May 2025. So, what went wrong with Cosmos 482? The upper stage of the launch vehicle shut down prematurely due to a timer malfunction. This prevented the spacecraft from escaping Earth's gravity and sent it into a low Earth orbit. The main spacecraft eventually burned up in the atmosphere, but the lander module continued orbiting. Okay. So, what is the Venera program? It was a Soviet interplanetary mission series aimed at exploring Venus. Okay. So, it was part of the 28 probes, of which 13 entered the Venus atmosphere and 10 landed on the surface. So the next topic is Scalp missile. This topic is again important for your security section. So in Operation Sindoor, Scalp missiles were used. So this is also called the Storm Shadow, like we saw earlier. It's a long-range air-launched cruise missile jointly developed by UK and France. It is also in service with the air forces of Egypt, India, Italy, Greece, Saudi Arabia, Qatar, and UAE. It has a range of around 500 kilometers. It weighs around 1300 kgs and it can carry a 450 kg conventional warhead. It can fly at subsonic speeds. It can fly at low altitudes to evade enemy radar. Uh, this missile's infrared guidance system compares the target with preloaded images so as to ensure high accuracy and minimize collateral damage. India integrates Scalp with the Rafale fighter jets, which are currently operated by the Indian Air Force. So the next topic is Persian Gulf. This topic is important for your international relations. So US President Donald Trump is planning to officially rename the Persian Gulf as the Arabian Gulf during a visit to Saudi Arabia, along with the preferences of the aligning with the preferences of the Arab Gulf nations. So the term Persian Gulf has been used consistently since the 16th century, but Arab states, especially Saudi and UAE, prefer the term Arabian Gulf. In 2012, Iran threatened to sue Google for not labeling the water body on its maps, asserting its historical naming rights. So, what are the geographical features of the Persian Gulf? The Persian Gulf is a marginal sea of the Indian Ocean. It is connected to the Arabian Sea via Strait of Hormuz. Its coastline stretches about 5,117 kilometers, with Iran having the longest stretch. The International Hydrographic Organization still recognizes this water body as the Persian Gulf. Okay. The Persian Gulf is central to global energy security, with about 30% of the world's oil exports still passing through this Strait of Hormuz. It is also a theater of naval deployment for countries like US, Iran, and Gulf states, often reflecting power projection and regional dominance. So the next topic is Jainu Kurba tribe. This topic is important for your social issues. Jainu Kurba families have recently begun their long-awaited reoccupation of their ancestral homes inside Nagarhole National Park. Jainu Kurba is recognized as a PVTG in Karnataka, and this community is the primary sources of income of this community is historically from land and forest resources. They live in small settlements called Hadi.
They live in a semi-nomadic style, which is not maintained by rulers, police, centralized visible forces, or religious monasteries. Their religious belief system refers to or relates to supernatural beings. So the next topic is IMDEX 2025. This topic is important for your security section. So INS Kiltan, which is an Indian naval ship, has arrived in Singapore to participate in IMDEX Asia 2025, held at the Changi Exhibition Center. So what is IMDEX, or IMDEX Asia is a premier maritime and defense exhibition in the Asia Pacific region, held biennially in Singapore since its inception in 1997. So it serves as a global platform for navies, coast guards, and maritime defense industries to showcase their naval platforms and systems, uh, debut, uh, debut cutting edge maritime technologies, engage in high level policy and strategic dialogue. We have this International Maritime Security Conference also, which is key part of IMDEX, and it was established in 2009. It is jointly organized by Republic of Singapore Navy and Rajaratnam School of International Studies. It brings together Navy chiefs, Coast Guard heads, policymakers, strategic analysts, and maritime stakeholders. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.